Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. This is an English lecture, chapter number 3, and the topic is on the ocean. Page number is 14. Okay, student, let's start our chapter. Let's page number 14, and the topic is on the ocean. On the ocean means समुंदर पर. Before reading our chapter 3, we will answer the question. The questions are in the box of pre-reading. Question number 1: have you ever seen an ocean? And you can answer that yes, I have seen an ocean. You can say that no, I have never seen an ocean. Point number 2: how do you feel on a hot day? इंतहाई गर्मी जब होती है तब आप कैसा महसूस करते हैं? The answer is I feel hot on a hot day and want to take fresh water and shady or comfortable shelter. गर्मी जब होती है तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं और ताज़ा पानी पीना चाहते हैं और कंफर्टेबल पुरसकून रहाइशगाह चाहते हैं जहाँ पे साया हो, धूप ना हो. Dear student, On the Ocean is in fact a poem. And what is poem? Poem is a piece of writing in which the expressions of feelings and ideas is given by particular attention to diction, especially rhyming scheme. पोइम यानी नज़म एक लिखाई का ऐसा हिस्सा होती है जिसमें शायर या पोइट अपने ख़यालात और एहसासात का तासुर वाज़े करता है और उसको कंपोज करने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, ख़ास तौर पर उसकी राइमिंग स्कीम की तरफ. एंड द पर्सन हु कंपोजेस द पोइम इज़ कॉल्ड अ पोइट. वो आदमी जो पोइम लिखता है या बनाता है और उसको शायर कहते हैं, मीन पोइट कहते हैं. Now we have known that what is poem and what is poet. And in this, On the Ocean is a poem and the poet is S.T. Coleridge. S.T. Coleridge composed the poem On the Ocean. Let's take a very short review. These stanzas of the poem have taken from a very famous poem, An Ancient Mariner. A rhyme of Ancient Mariner. Ancient Mariner means एक बूढ़ा मलाह या फिर जहाज़रान. This is a very famous poem by S.T. Coleridge. In Ancient Mariner, एक बूढ़ा जहाज़रान जहाज़ चलाने वाला होता है. ये नज़म एक बूढ़े जहाज़रान के बारे में बताती है कि इसने कुछ लोगों के साथ जहाज़ में सफ़र किया तो अचानक एक परिंदा इनके पास आया. उन्होंने इसे वेलकम किया. इस तरह उन्होंने खुशगवार सफ़र का आगाज़ किया. बट देन एंशियंट मैरिनर किल्ड दिस बर्ड इन प्राइड. इसलिए इन्हें इसके लिए सज़ा दी गई. तमाम लोग सवाए इस बूढ़े जहाज़रान के मर गए. बूढ़ा मलाह कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहा. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग and translation of chapter 2. First stanza. I read out the first stanza. Focus on your book, page number 15. All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon.
ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, गरम और तांबे, कॉपर तांबे जैसे आसमान पर, तन्हा यानी अकेला, द ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक्त, ब्लडी सन मीन खूनी सूरज यानी इंतहाई सुर्ख सूरज जो गर्मी की वजह से हो गया है या जो बहुत ज़्यादा हरारत दे रहा है। राइट अप अबव द मेस्ट डिड स्टैंड, एंड मस्तोल के ऊपर मौजूद था। मेस्ट पुरानी अगर हम कश्तियाँ देखें तो पेज नंबर 14 में भी आपने देखा जो पुरानी कश्तियाँ होती थी उसमें ये देखें पुरानी कश्तियाँ जिसके ऊपर बड़ा सा एक डंडा लगाया जाता था और कपड़ा हैंग कर दिया जाता था और उसे मैस्ट बोला जाता था यानी मस्तोल बोला जाता था। तो बिल्कुल ये मस्तोल के ऊपर क्या मौजूद था, सूरज मौजूद था यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सूरज सर पे आ चुका था। नो बिगर देन दी मून, और चांद से बड़ा नज़र नहीं आ रहा था यानी सूरज चांद से बड़ा नज़र नहीं आ रहा था। This is the depiction of the scene and the first question in the first stanza. Question number 1. What do you understand by copper sky? This is the first within exercise question. What do you understand by copper sky? तांबे जैसे सूरज से आप क्या मुराद लेते हैं या आप क्या समझते हैं? And the answer is the copper sky means very hot sky. The copper sky means very hot sky. तांबे जैसे आसमान का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म आसमान यानी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। Okay student, let's start the reading of second stanza. Day after day, day after day, दिन पर दिन गुजरते गए, दिन पर दिन गुजरते गए। वी स्टक, हम जम गए, जामिद हो गए। नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, ना ही हम सांस ले रहे थे मतलब कोई हवा नहीं थी, नॉर मोशन और ना ही कोई हरकत थी। एज आइडल एज आ पेंटेड शिप upon a painted ocean. एज आइडल, हम इस तरह खड़े थे एज आ पेंटेड शिप, जैसे कि नक्श की गई कोई कश्ती हो या नक्श किया गया जहाज़ हो। upon a painted ocean, किसी तस्वीर पर नक्श समुंदर में, यानी बिल्कुल हवा नहीं थी, ना ही कोई हम सांस ले रहे थे यानी मुश्किल से हवा नहीं थी, ना ही कोई हरकत थी। हम लोग ऐसे थे जैसे किसी नक्श किए गए समुंदर में नक्श किया गया जहाज़ हो यानी एक तस्वीर की मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेसनेस। यहाँ पे शायर ने जामद हो जाना, खड़े हो जाना, मुंजमद हो जाने को कैसे बयान किया है? And the answer is the ship seemed to be painted upon a painted ocean. The ship seemed to be painted upon a painted ocean. It means that there was no wind blowing, even there were no ripples. इसका मतलब है कि कश्ती ऐसे हो गई थी जैसे एक नक्श किए गए समुंदर के ऊपर एक नक्श किया गया जहाज़ हो। इसका मतलब ये है कि ना हवा चल रही थी और ना ही लहरें थीं। अगर हवा होती तभी तो समुंदर में लहरें पैदा होती हैं, इसलिए देयर वॉज नो विंड ब्लोइंग इवन देयर वर नो रिपल्स, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। लेट्स स्टार्ट दी थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर तरफ पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड डिड श्रिंक, और जहाज़ के तख्ते पिचक गए मतलब सुकड़ गए, श्रिंक सुकड़ गए। ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, तमाम कश्ते जहाज़ के तख्ते पिचक गए, सुकड़ गए गर्मी और हरारत की वजह से। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। स्टूडेंट फोकस ऑन दीज लाइन्स। वाटर वाटर एवरीवेयर, दिस लाइन इज रिपीटेड
In third stanza, first line is water, water everywhere, and the third line is water, water everywhere. It means a first line and third line of the third stanza is same. वाटर वाटर एवरीवेयर मीन हर तरफ पानी ही पानी था. जब एक ही बात को शायर या पोइट बार बार बयान करे, रेपिटिशन हो, तो इसका मतलब है कि वो उस बात पर, उस पॉइंट पर फोकस करवाना चाहता है. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ समुद्री पानी ही पानी था, समुंदर का पानी ही पानी था. बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा तक न था. पीने के लिए मीठे पानी का एक कतरा तक न था. क्वेश्चन नंबर 3. Why there is not a single drop of water to drink? क्यों पानी पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था, क्यों नहीं था? And the answer is they did not have any drop of fresh drinking water. They did not have any drop of fresh drinking water. They had consumed their whole supply of fresh water, but there was water, polluted water of ocean everywhere. Okay, student, at the end of this poem there is a name, Samuel Taylor Coleridge, mean St. Coleridge. This is the name of the poet mentioned at the end of the poem. Okay, here are brief sketch about the poet. St. Coleridge, 1772 and 1834. This is the date of birth and date of death. Was an English poet, literary critic and a philosopher. St. Coleridge 1772 से 1834 तक एक बरतानिया का पोइट था और ये क्रिटिक भी था, क्रिटिक तनकीद निगार था और फिलोसफर यानी फलसफी भी था. अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, उसने जो काम लिखे या शायरी का काम लिया, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, उसमें पहली किताब आई द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एंड द कुबला खान. ये दोनों बुक्स आर द मोस्ट एप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोइम्स. ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ की गई एंड वेल नोन पोइम्स, और बहुत ज़्यादा मशहूर पोइम्स यानी नज़में थी. बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ हीज़ प्रोज वर्क, हीज़ मेजर प्रोज वर्क. अगर नसर देखी जाए तो उसने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी अबाउट द पोइम. These stanzas have been taken from St. Coleridge poem The Rime of Ancient Mariner. जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये पोइम जिसका नाम ऑन द ओशन है, ये हकीकत में St. Coleridge की एक लॉन्ग पोइम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर से 3 स्टैंजास लिए गए हैं. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश ज़ुबान में बहुत ज़्यादा पुरअसर पोइम्स में से या नज़मों में से एक है. द पोइम इज़ अबाउट एन ओल्ड सेलर. ये पोइम किसके बारे में है? एक बूढ़े मल्लाह के बारे में है. हु नरेट्स हिज लॉन्ग स्टोरी, जो बयान करता है कि अपनी लंबी कहानी अबाउट अ वॉयज इन विच हिज एंटायर क्रू वॉज किल्ड, जिसमें इस सफ़र में, वॉयज समुद्री सफ़र को कहते हैं, और क्रू जो उसका अमला था, उस समुद्री सफ़र के दौरान इसका सारे का सारा अमला कत्ल हो गया, मर गया. In the given stanzas, the narrator explains the hardships and dangers that they encountered during the sea voyage. इन स्टैंजाज में, ये जो 3 स्टैंजाज दिए गए हैं, उसमें शायर ने बताया है या बयान करने वाले ने बताया कि कितनी परेशानियां और ख़तरात उन लोगों को उस समुद्री सफ़र के दौरान झेलने पड़े या बर्दाश्त करने पड़े. ओके डियर स्टूडेंट्स, do the reading. Your diary is do the reading, learn translation and write within exercise question answers on your notebook. See you later with new lesson.